Hi, good evening, everyone. This is Shefali Singla, and in this session, we are going to start with the concepts of greedy technique. So, greedy technique is one of the algorithm designing technique. Just like we have covered the applications of DAC, similarly, we'll be covering the applications of greedy technique. Now, next question is what sort of questions can be asked from greedy technique? तो greedy technique में से आपके पास पहली चीज जो questions आएंगे most probably it will be the application based question or they may ask for the time complexity but time complexity बहुत rarely पूछते from the greedy technique. But application based question एक पक्का आएगा. So if you have understood the application in depth, अगर आपको पूरी understanding application की तो आपको कोई problem नहीं आएगी in the greedy technique. Almost we have 6 applications. So one by one we'll cover all the applications. So those who have joined the session live, quickly give me the confirmation if the audio and the video is fine. I hope that's working. Very good afternoon, Prashant. Okay. So after this, we'll be talking about dynamic programming. Anyone having any idea that what's the difference between the greedy technique and the dynamic programming? एक और application आनी है हमारे पास, that is dynamic programming. दोनों में difference क्या है? Divide and conquer में तो we have observed that we are dividing a problem into the subparts and then we are solving the sub problems to get the solution of the original problem. तो प्रॉब्लम को लार्ज प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं एंड फाइनली वी कंबाइन द सॉल्यूशन टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम. बट ग्रीडी टेक्निक में वी आर नॉट डूइंग सो. So what's the difference between dynamic programming and greedy technique? Dynamic programming is also one of it's also going to make a recursive call on the functions. But पूरी problem को consider करते हैं. Greedy technique means it just look at the values available currently. उस particular time पे जो values available होंगी उनमें से it will find out the best possible solution or the optimal solution. But if you talk about the dynamic programming result देने से पहले सारी सब problems को consider करते हैं. सारी सब problems को जितनी भी possibilities बनती है it will find out the solution for that and after that it's going to return the result. That's the dynamic programming. अगर हम real life example से compare करते हैं तो it's just like जैसे cricket match चल रहा है तो many people are like who is going to win the match. तो उनमें से कुछ लोग जो करंट सिनेरियो होता है जो टीम्स की करंट पोजीशन होती है उसके बेसिस पे गेस वर्क स्टार्ट कर देते हैं दैट first team or the second team is going to win the match. That is greedy technique. But if any people is saying that will wait till the end, don't know who is gonna win. So that means it is going to wait till the end. जब भी final results सामने आएंगे, then it will declare that who is the winner. या फिर आपका बीटेक का रिजल्ट आता है फर्स्ट ईयर के या फर्स्ट सेमेस्टर में जो टॉप करता है मेनी पीपल आर लाइक ओके ही और शी विल बी द टॉपर ऑफ द बैच. मतलब फाइनली एंड पे टॉपर कौन होगा जिसने फर्स्ट सेम में टॉप किया. दैट इज making some guesswork. सबने assume कर लिया that this is going to happen on the basis of the current scenario. But dynamic programming में क्या होता है positions change हो सकती हैं किसी की ego पे आ सकती है बात कि भाई मेरे मार्क्स कम आए. So anything can happen. So it dynamic programming it will wait till the result of all the semesters. That is dynamic programming. That means in greedy technique it is making some guess. डायनामिक प्रोग्रामिंग में कोई गेस नहीं होता. गेस किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ or it is returning the best possible or it returns the optimal solution. It returns the optimal solution from the available or you can say available solutions or on the basis of the current scenario by making some guess.
by making some guess. Is this difference clear to everyone? Whereas in dynamic programming, it always returns, it always returns the optimal solution by covering all the possibilities. Guys, is this difference clear? In dynamic programming, we calculate the recursive function once. Later, we use the same recursive function and we don't calculate the recursive function again. सी रिकर्सिव फंक्शन का मतलब ही ये होता है कि आप सेम फंक्शन को डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे बार बार अप्लाई कर रहे हो. इफ यू आर सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू यूज द रिकर्सिव फंक्शन अगेन, दैट्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. रिकर्सिव का मतलब ही ये होता है कि आप एक ही फंक्शन को बार बार यूज करो. व्हेन यू आर मेकिंग अ कॉल टू द सेम फंक्शन एंड अगेन, दैट इज नोन एज रिकर्शन. So this means that the concept of dynamic programming, आप जितने भी possibilities बनती हैं सबके ऊपर आप same function apply करोगे. Hence it is going to be a recursive call. Recursively it will find out the solutions of all the sub problems. So dynamic programming में definitely recursive call आएगी. Recursive call आएगी तो we can return the recurrence relation. But since it is going to cover all the possibilities, so definitely its time complexity will be more. Okay? Make sense? So if we talk about the applications of the greedy technique that we have to cover, so first of all, today we'll try to finish first two applications, that is job sequencing with deadline and greedy knapsack. Then in tomorrow's session, we'll be covering Huffman coding and optimal merge pattern. Then I'll be taking one session on minimum cost spanning tree. Can somebody tell me that what are the algorithms available for minimum cost spanning tree and algorithm for single source shortest path? We have two algorithms for minimum cost spanning tree. One is the Kruskal's algorithm, and other one is the Prim's algorithm. Whereas for single source shortest path, we have two algorithms. One is Dijkstra's algorithm and Bellman-Ford algorithm. Okay, so let's start with the first application. I hope यहाँ तक कोई doubt नहीं होना चाहिए. And guys, don't focus on noting down the things during the session because it's more important to understand the concept rather than noting down the things, because anyhow whatever I'll be noting down or whatever I'll be writing or it's present in the slides, that will be shared with you guys in the Telegram group, that is Shefali ma'am Testbook. इससे पहले भी जितने भी sessions हुए, you guys know that from all the sessions I'm sharing the PDF in this Telegram group. You can post your queries if you have any. You can directly interact with me. You can participate in the quiz and polls. And the link of this group is given in the description box. That's the third link in the description box. Otherwise, you can search for Shefali Ma'am Testbook. Easily, you will get this group. Okay. तो इसलिए बेटर आइडिया है कि कॉन्सेप्ट समझ लो, नोट्स तो मिल ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. First one is known, first application is the greedy knapsack. So anyone having any idea that what is this greedy knapsack or what do you understand by greedy knapsack? एक एक करके टर्म्स को डिस्कस करते हैं. Greedy means lalchi. So that means something which is focusing on getting the more profit. Some यहाँ पे ultimate goal क्या है greedy knapsack का? To get more profit. Profit किस चीज का? कैसे profit? What is this term knapsack? Knapsack is something like bag. Let's assume there is some thief, कोई चोर है, एक घर में घुसता है चोरी करने के पर्पस से obviously.
तो चोर का मेन मोटिव क्या होगा कि भाई मैं ऐसी चीजें लूं जिनको सेल करने के बाद मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. सो अल्टीमेट गोल ऑफ द थीफ इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. अब प्रॉफिट कंसिडर करने के लिए बट चोर का एक असूल है कि भाई उतना ही सामान लेके जाना है जितना बैग में फिट हो जाए. हर बैग की कुछ कैपेसिटी होती है. सो इन द क्वेश्चन यू विल बी गिवन विद द कैपेसिटी ऑफ द बैग, यू विल बी गिवन विद द ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है एंड व्हाट इज द प्रॉफिट एसोसिएटेड विद दोस प्रोजेक्ट्स, विद दोस ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो हर ऑब्जेक्ट के करेस्पॉन्डिंग आपको प्रॉफिट और वेट गिवन होगा. सो लेट्स अज्यूम दैट देयर इज सम ऑब्जेक्ट गिवन टू यू. Corresponding to each object, there can be n objects. Corresponding to each object, you will be given with the weight of the object and profit associated with the object. But problem here is thief cannot take all the objects because of the capacity of the knapsack, or you can say that the capacity of a bag. This is the problem. Problem here is the weight of problem kab aati hai when the weight of, if we have n objects, agar hamare paas n objects hai, then the weight of all the objects, so I'm taking the sum of weight of all the objects starting from object 1 to n, 1 से लेकर n जितने भी objects हैं सारे objects का weight is greater than the capacity of a knapsack. Let me write this as C. Okay, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई. सो द thief has to make a decision that what all objects it needs to take और कौन से objects छोड़ने हैं. राइट, एल्गोरिथम कभी भी कब काम करता है जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो और व्हेन यू वांट टू मेक सम डिसीजन. So here, when the weight of all the objects will be greater than the capacity of the knapsack, then it has to make a decision that what all objects it should carry and what objects will be left out. So this is the problem scenario. ये क्लियर हुआ. फिजिबल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा इसमें कि आप ऑब्जेक्ट को knapsack के ऊपर हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आएंगी. वन इज द 01 knapsack एंड अदर वन इज द greedy knapsack. द मेजर डिफरेंस इज greedy knapsack में आप ऑब्जेक्ट को फ्रैक्शंस में ले सकते हो. सो दैट्स व्हाई greedy knapsack इज आल्सो नोन एज fractional knapsack. Whereas 01 knapsack नाम से समझ में आ रहा है या तो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली लेना है या फिर पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लेना है. सो एनी हाउ दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग. तो हमारे पास ग्रीडी टेक्निक में एप्लीकेशन आती है ग्रीडी knapsack. दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल knapsack. दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल knapsack और रियल knapsack. तो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कितना प्रॉफिट मिलेगा जिस फ्रैक्शन में लिया. अगर पूरा ऑब्जेक्ट लिया तो पूरे ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट मिलेगा, आधा लिया तो आधे का मिलेगा, 1/3 लिया तो 1/3 का मिलेगा. सो ऑब्वियसली द फिजिबल सॉल्यूशन विल बी, आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो जिस भी फ्रैक्शन में ले रहे हो, एक्स आई इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन वेयर आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लेकर n तक. जितने भी ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो जिस भी फ्रैक्शन में ले रहे हो, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी. यानी कि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है उनका वेट, या फ्रैक्शन में अगर आपने ऑब्जेक्ट्स लिए सबका वेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी. इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन कैपेसिटी. नाउ व्हाट विल बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा. व्हाट विल बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. Optimal solution here is to earn more and more profit. Correct? Ultimate goal is to get more profit. So how will you get more profit? That means जो भी आपने objects लिए हैं, corresponding to each object will look at the profit. हर object के corresponding profit है. Profit कितना मिलेगा जिस fraction में आपने object लिया है, and this should be maximum profit should be maximum. So I is equal to 1 to n. हर ऑब्जेक्ट के लिए चेक करने
कि ऑब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना। ये क्लियर हुआ? तो प्रॉब्लम विल look something like object 1, object 2, object 3. For example, तीन objects given है, and corresponding to each object you will be given with the profit and weight. आपको प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से मिलेगी, profit and weight. For example, corresponding to object 1, profit is P1, P2, P3, and weight is W1, W2, W3. और हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। Okay, so let's consider one example. There are three objects, so I'll be considering all the possible three cases. Possibility क्या हो सकती है? Some thief might be greedy about the profit. मतलब जिस ऑब्जेक्ट का सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, it will take that object. Other possibility is a thief might be greedy about the weight. Greedy about the weight means thief wants to carry more and more number of objects. भी मेरे बैग में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाए, ज्यादा ऑब्जेक्ट्स कब आएंगे? कैपेसिटी फिक्स्ड है, ज्यादा ऑब्जेक्ट्स कब आएंगे? व्हेन इट इज सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट विद द मिनिमम वेट. कम कम वेट वाले ऑब्जेक्ट्स को पहले ले लेगा, सो ऑब्वियसली इट विल बी एबल टू कैरी more objects. Third possibility is it is considering both profit and weight. आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, this is just to make the comparison. Okay, so greedy about, एक केस क्या बन सकता है? Greedy about profit. Other possibility is greedy about weight. Third possibility is when it's greedy about both profit and weight. इसके अलावा और कोई possibility? Is there any other possibility? No. Okay. Now, when it's greedy about profit, that means it will be considering the objects with the maximum profit first. So let's start. Here we are given with three objects. हमें ये identify करना है कौन सा object किस ratio में लिया, object 1, object 2 and object 3. We need to consider the capacity of a knapsack. Capacity, C is representing the capacity. N is equal to 3 means there are three objects. Capacity is given as 20. Initially bag is empty, so it is going to check for the maximum profit. Kiss object ka maximum profit hai? Because it's greedy about profit, so it will look at the higher profit objects first. So object 1 is having profit scale 25, 24 and 15. So 25 is having the maximum profit, so it will opt for the, it will check ki weight, sufficient weight available hai. Total capacity available is 20, but जो object 1 का weight है that is 18. That means out of 18 units, it can take out 18 units. पूरे units ले सकते हैं, यानी कि this comes out to be one object is taken completely. So remaining capacity will be total 20 units carry कर सकता था, 18 carry कर लिए, so 18 minus 2, 20 minus 18 is 2. Remaining capacity of the knapsack is now updated to 2. Now it will look at the other two objects. Maximum profit is associated with object 2. Object 2 का total weight is 15, but capacity कितनी remaining है? That is 2. So it can carry 2 units out of available 15 units. So the capacity becomes 0. This means that object 3 बिल्कुल नहीं लिया. So objects are taken. Now let's calculate the profit. Profit will be object 1 कितना लिए completely, तो प्रॉफिट भी पूरा मिलेगा. ऑब्जेक्ट 1 का प्रॉफिट है 25. ऑब्जेक्ट 2 2 units are taken out of 15 units, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलेगा. दिस इज into 24 plus third object is not taken, that is 0, तो profit will not be calculated for object 3. Now just simplify this and get the value for the profit. It is 25 and this will be cancelled. 5, 8 and this is 16 plus 3.1
3.2. So ultimately it comes out to be 28.2. So this is the profit earned when it's greedy about profit. Similarly, we'll calculate when it's greedy about weight. That means it wants to carry more and more number of objects. So it will be looking at the less weight objects. It will look at the less weight objects क्योंकि अगर कम weight वाले objects को लेगा then only it will be able to carry more objects, right? Are you getting this? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एग्जाम में ऑब्वियसली वी वॉन्ट बी डूइंग दिस. मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लेके कंपैरिजन करवाए. एग्जाम में हम डायरेक्टली एल्गोरिथम यूज करेंगे. So greedy about objects. So here let's consider all the three objects. This is object 1, this is object 2, this is object 3. Now object weights are 18, 15 and 10. That means first of all object 3 will be taken क्योंकि सबसे कम weight किसका है? Object 3 का. 10 units are available. Capacity available कितनी है? 20. So 10 units will be taken out of 10. So remaining capacity comes out to be 10. 20 minus 10 is 10. 18 and 15 will consider the less weight object. So this is 15 units of object 2 are available. 15 units है but capacity 10 की ही है. So it will take 10 units out of 15 units. And capacity becomes 0. Object 1 is not taken. Calculate the profit. Greedy about weight means will take the higher weights? No. Will not take the higher weights. When it's greedy about weight, then it will be looking at the less weight objects. कम वेट वाले ऑब्जेक्ट्स को क्यों प्रेफरेंस दे रहा है? क्योंकि कैपेसिटी फिक्स्ड है. अब मान लो कि कोई 10-12 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, कैपेसिटी 20 केजीज कैरी करने की है. एक ऑप्शन तो यह है कि 20 केजीज का एक ही आइटम ले जाओ. दूसरी ऑप्शन ये है कि 20 केजीज में छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे. So in this case, it wants to carry more number of objects. तो ज़्यादा objects कब carry होंगे? When it will be focusing on the less weight objects. Okay? So profit. Object 1 के corresponding कोई profit नहीं मिलेगा क्योंकि object 1 लिया ही नहीं. Object 2 के corresponding 10 out of 15 and this is 24 plus object 3 is taken completely तो profit भी पूरा मिलेगा. 2 and 3 and 8. So this comes out to be 0 plus 16 plus 15, that is 31. So profit earned is 31 when it's greedy about weight. Next one, greedy about both profit and weight. तो इसने अपना दिमाग लगाया कि सिर्फ ज्यादा ऑब्जेक्ट्स कैरी करने से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट. जब ज्यादा प्रॉफिट देखा था तब ओनली इट गॉट 28.2. When it was greedy about weight, it is getting 31. तो अब इसने सोचा कि बेटर आइडिया इज कि पर यूनिट कितना प्रॉफिट मिल रहा है, एवरेज निकालो. ओके, सो दैट इज द थर्ड केस, ग्रीडी अबाउट बोथ प्रॉफिट एंड वेट. 25 यूनिट्स 18 यूनिट्स के पीछे, फॉर 18 यूनिट्स 25 का प्रॉफिट हो रहा है. 1 यूनिट के लिए कितना प्रॉफिट होगा? अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल केजीज है, मान लो मैंने यहाँ पे यूनिट जो वेट है वो केजीज में लिया है. अगर 18 केजी के लिए 25 का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 केजी के लिए कितना होगा? दैट विल बी 25 डिवाइड बाय 18. Yep. So similarly here, basically what we are calculating is 25 is nothing but this is a profit and 18 is the weight of the object. So for all the objects, we'll calculate, in case of greedy about both profit and weight, we'll calculate the profit upon weight ratio for all the objects. Calculate profit upon weight ratio. ये रीजन क्लियर हुआ क्यों प्रॉफिट अपॉन वेट रेशियो देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस में ऑब्जेक्ट ले सकते हैं. तो लेट्स सी पर यूनिट व्हिच ऑब्जेक्ट इज गिविंग यू, व्हिच ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू रिटर्न मोर प्रॉफिट. सो दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग हियर प्रॉफिट अपॉन वेट रेशियो. सो फॉर द ऑब्जेक्ट 1, for object 1 will get profit upon
weight. Profit of object 1 is 25 and weight is 80. For object 2, similarly, we'll calculate for object 2 profit upon weight. Just calculate the values. For object 3, this comes out to be profit upon weight 15 divided by 10. Now it's 3 by 2, which comes out to be 1.5. I hope it's not going behind the image. This is something like 1.3 and this is 1.6. Okay. Now we'll focus on 31. 31 answer आएगा? I don't think so. So anyhow, now first step is to find out the profit upon weight ratio. अब obviously बात है कि will be preferring the object. कौन से object को पहले prefer करेंगे जिसका profit upon weight ratio ज़्यादा है. So let's take here object 1, object 2 and object 3. This is for object 1. Object image के पीछे जा रहे. Wait a minute. Hope it's visible now. So object 2 and object 3. Main idea वही है, capacity is how much? Capacity is 20. Initial capacity is 20. तो सबसे पहले कौन से object को prefer करेंगे? 2 को. उसके बाद हम object 3 को prefer करेंगे and then we'll prefer object 1. ऑब्जेक्ट 2 के आपके पास 15 यूनिट्स अवेलेबल हैं. अवेलेबल कैपेसिटी इज 20, यानी कि ऑब्जेक्ट 2 को कंप्लीटली ले सकते हैं. सो ऑब्जेक्ट 2 विल बी टेकन कंप्लीटली. रिमेनिंग कैपेसिटी विल बी अपडेटेड टू 20 minus 15 is 5. Then second preference will be given to object 3. Object 3 के हम 5 units ले सकते हैं out of the available units 10. So 5 out of 10 units will be taken from object 3. आप देख रहे हो यहाँ पे हम fractions में भी object carry कर सकते हैं. So that's why this is known as the fractional knapsack. Object 1 के लिए कोई possibility नहीं बची. So object 1 will not be taken. Now you can calculate the profit. Profit will be object 1 is not taken. Object 2 is taken completely. Object 3 is taken half. Half of the profit भी half मिलेगा. So it is 50. That comes out to be 24 plus 7.5. That is 31.5. Now compare all the values when the maximum profit is earned. In the first case, it's getting a profit of 28.2. In the second case, it's getting a profit of 31. In the third case, it's getting a profit of 31.5. So this means that this is the optimal solution. तो अगर आपके पास greedy knapsack का कोई भी question आता है, you have to follow the approach. हमें algorithm समझ में आ गया. Algorithm क्या बोल रहे हैं? If maximum profit has to be earned, algorithm is saying that first of all, for the given objects, calculate the profit upon weight ratio and after that arrange them in the ascending order. On the basis of किसके basis पे ascending order में arrange करें? मैंने यहाँ पे numbering की है. On what basis we have done this numbering? On the basis of the maximum profit upon weight ratio. And then accordingly select the object. So this is the algorithm for greedy knapsack. This is just for the understanding. In the exam we will be just considering the third case, that is when it's greedy, it's going to get the maximum profit when it is greedy about both profit and weight ratio. Is this clear? Anyone having any doubt? So your problem will look like something like this. So in this case, we are given with 5 objects and we have to calculate the maximum profit. So number of objects are given as 5. 5 objects given है. Object 1, object 2, object 3, object 4 and object 5. And the capacity of maximum capacity of knapsack is given to you, that is 12. We have to calculate the maximum profit and we have understood that the maximum profit will be obtained when it is greedy about both profit and weight. Correct? Do you want to try this? और एक क्वेश्चन में करती हूँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना. So profit upon weight
For all the objects, we'll calculate the profit upon weight ratio. Object 1, it will be 5 divided by 5. That comes out to be 1. So we will be going to use, thank you ma'am, for what? Yes, थर्ड अप्रोच क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही है इसलिए हम थर्ड अप्रोच यूज करेंगे दैट इज ग्रीडी अबाउट बोथ प्रॉफिट एंड वेट सो फर्स्ट स्टेप वन इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अपॉन वेट रेशियो तो हर ऑब्जेक्ट के लिए मैं प्रॉफिट अपॉन वेट रेशियो कैलकुलेट कर रही हूँ 2 divided by 4 that comes out to be 1.2 1 by 2 so that's 0.5 for object 3 this will be 2 divided by 6 that is 1 divided by 3 so it will be 0.33 then for object 4 profit upon weight ratio is 4 divided by 2 that comes out to be 2 for object 5 it's 5 divided by 1 that comes out to be 5 yes in all the problems I'm going to take the problems as well. So this is basically the algorithm which we used for greedy knapsack. Now we have to arrange these objects in the ascending order. Sorry, descending order. Maximum profit को हमें पहले consider करना है. So that is returned by object 5. First priority will be given to object 5, then object 4, then to object 1, then object 2 and object 3. So ascending or descending order में जब आप arrange करोगे you will be getting object 5 then we'll be giving second preference to object 4 then to object 1 then to object 2 and object 3. Okay, this way we'll be selecting the objects. So let's see what fraction will be taken from each object. So this is object 1, this is object 2, object 3, object 4 and object 5. First of all, we'll be opting for the object 5. Object 5, let's maintain here the capacity. Capacity is 12. Object 5 का कितना weight available है? It's just 1 unit. So this object will be taken completely क्योंकि जो weight of the object है, here the weight of the object is less than the capacity. That means आप object को पूरा ले सकते हो. So 12 minus 1 is 11. Now consider the next object, object 4. Object 4 का weight 2 units available है but the capacity is 11. तो यानी कि object 4 भी completely ले सकते हैं. So 11 minus 2 weight available is 2 units. So 11 minus 2 is 9. This object is taken completely. Next object will be object 1. Object 1 का weight available is 5. कैपेसिटी 9 यूनिट्स की है तो ऑब्जेक्ट 1 को भी पूरा ले सकते हैं सो दिस इज टेकन कंप्लीटली 9 minus 5 is 4 available capacity is 4 now we'll consider the next object object 2 का weight कितना है 4 units कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है 4 units so that means ऑब्जेक्ट को completely ले सकते हैं 4 units are taken out of the available 4 units so that comes out to be 1 and कैपेसिटी बिकम 0 नैपसैक पूरा भर चुका यानी कि ऑब्जेक्ट 3 बिल्कुल नहीं लिया जाएगा नाउ विल कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑब्जेक्ट 1 कंप्लीटली लिए सो इट इज 1 into its profit is 5 ऑब्जेक्ट 2 भी कंप्लीटली लिए इट्स प्रॉफिट इज 2 ऑब्जेक्ट 3 बिल्कुल नहीं लिया तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा प्लस फॉर ऑब्जेक्ट 4 it's 1 into 4 plus 1 into 5 simplify it 5 plus 2 plus 0 plus 4 plus 5. 9 plus 2 is 11 and 5 is 16. So the maximum profit that is earned here is 16. जो जिन लोगों का 17 आ रहा है 10.4 आ रहा है यानी कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है so basically here we are just following the three steps. First step is what is the first step? So algorithm आपको समझ में आ गया होगा. What all steps did we followed here? Find for all the objects. For all objects, we are finding profit upon weight ratio. After that,
uh, sorting or arranging in descending order on the basis of profit upon weight ratio. After that, we are selecting the objects. हम क्या कर रहे हैं? हम comparison करवा रहे हैं for all the objects. We are looking for if capacity is greater than weight of the ith object. एक एक करके आप object select कर रहे हो, then you are taking the object or you are taking it in the fraction. तो if वाला case आ जाएगा, right? So these are the three major steps of greedy knapsack. I hope that this is clear to everyone. Greedy knapsack clear हुआ? So I'm giving you one problem. Just try that problem. Try to get the answer for that. Profit calculate करो. उसके बाद हम complexity discuss करेंगे, and then we'll be done with the first application. Okay. Here in this case, you are given with 7 objects. Number of objects given are 7. Capacity of a knapsack is 15, and you are supposed to return the maximum profit. Try करना है या मैं करूँ? Capacity. This is the maximum capacity. C is representing the maximum capacity, where N is representing the number of objects. We'll try. Okay. Try करना है, करो. So first of all, you need to calculate the profit upon weight ratio. That's the very first step. Wait for 2 minutes. All right. $31. ओके, लेट्स चेक इट आउट. तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट अपॉन वेट रेशियो. प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए प्रॉफिट अपॉन वेट रेशियो कम्स आउट टू बी 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 5 divided by 3 1.6, 15 divided by 5 comes out to be 3, 7 divided by 7 1, 6 divided by 1 6, 18 divided by 4 it will be 4.5, and 3 divided by 1 is 3. Now next step is to arrange them in the descending order on the basis of the profit upon weight ratio. Descending order में sort कर रहे हो आप. Descending order. So first of all, the first priority will be given to object 5. Then second priority will be given to object 1. Then object 6. Now two objects are having the same profit upon weight ratio. तो आप इसमें पहले किसी को भी consider कर सकते हो, because profit upon weight ratio means per unit how much profit is earned. अगर दो object बोल रहे हैं कि per unit same आएगा, so any object can be taken. Let me call this as 4. 3 तक हो चुका, so I'll be considering this on the fourth number 5.
6 and 7. मैंने descending order में arrange कर लिया. Now consider the objects 3, 4, 5, 6 and 7. This is object 7, object 1, object 2, object 3, object 4, object 5, object 6. So first of all, we'll be preferring the object 6. Capacity is given as 15. सबसे पहले object 5 को consider करेंगे. This is number 1. So its weight is 1. Weight 1 है. So obviously this object can be taken completely. So this is about the object 5. Object 5 completely ले लिया. Remaining capacity is 14. Now on the second number we have to prefer object 1. Object 1 का weight 2 units available है. So this will be taken completely. This is taken. Object 1 will also be taken completely. Remaining capacity will be 12. 2 out of 2 means 1 complete fraction is taken. Then on the third number, object 6 is taken. Weight available is 4. So this comes out to be 8. This object is also taken completely. चारों units ले लिए, so fraction comes out to be 1. After that, on the fourth number, object 3 we are considering, weight is 5. क्या ये 8 से कम है? बिल्कुल कम है. So this will also be taken completely. So this is 5 object 3. 1 unit. This object is also taken. Next one, object 7. Object 7 का weight 1 unit है. So this will also be taken completely. 1 unit. And remaining capacity is 2. After that, we are just left with 2 objects. Preference will be given to object 2. Object 2 के 3 units available है, but capacity सिर्फ 2 unit carry करने के लिए. That means it will be going to pick 2 units out of the available 2 units and capacity becomes 0. Now take the profit. Object 1 is taken completely. 1 into its profit is 10. Object 2 is taken 2/3 and its profit is 5. Third object is taken completely, 1 into 15. Plus fourth object is not taken, its profit is 7. Fifth object is taken completely, so it's 1 into 6. Sixth object is also taken completely, so it is 1 into 18. Seventh object is also taken completely, 1 into 3. Just simplify it. It comes out to be 10 plus 2 into 5 is 10 divided by 3. It comes out to be somewhere around 3.3. Plus 15 plus 0 plus 6 plus 18 plus 3. Is it 52? I don't think so, क्योंकि point में आ रही है मेरे पास value यहाँ पे. So just calculate it. So it's 10 and 15, 25, 25 and 33, 33, 39, 42. Wait. 33, 43, and this is coming out to be 55.33. Just check it. 25 and 43, 43 and 9 is 43 and 9 is 52. Yeah, 55.33. So this is the optimal solution. Is this clear? I hope algorithm clear हो गया होगा. 3 ही steps है. You just have to follow those steps and you will end up with the optimal solution. So 55.33 is the optimal solution. Is it clear? जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशन में गलती हो जाते हैं. तो जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्कर में आपने जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए, जो कॉन्सेप्ट समझा है, उसी को गलत कर दो. उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आपको मालूम है. So just take care of this thing. Anyone having any doubt in greedy knapsack? So if we look at the algorithm,
ये पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द प्रॉफिट अपॉन वेट रेशियो फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स. सो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड फॉर स्टेप 1. स्टेप 1 में हमने ये बोला है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स कैलकुलेट प्रॉफिट अपॉन वेट रेशियो. अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, 2 के लिए कैलकुलेट करोगे, 4 ऑब्जेक्ट है, 4 के लिए करोगे, 10 ऑब्जेक्ट है, 10 के लिए करोगे. सो सिंपली आई एम टेकिंग हियर वन फॉर लूप starting from the first object going till the nth object and considering all the objects. और सबके लिए हमने प्रॉफिट अपॉन वेट रेशियो कैलकुलेट करवाई और उसको एक एरे में रखे, क्योंकि एनी हाउ हम उस एरे को सॉर्ट करने वाले हैं बाद में. सो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द स्टेप 1. फर्स्ट स्टेप के लिए क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी. दिस इज जस्ट अ फॉर लूप. अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉर लूप देयर इज वन स्टेटमेंट. सो दिस इज गोइंग टू टेक ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि ये लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, 1 से लेकर n तक जा रही. आफ्टर दैट step 2, we want to arrange all the elements in the descending order of profit upon weight ratio. That means somewhere here we are considering the sorting. Step 2 में हम क्या कर रहे हैं, sorting. अब sorting के लिए बहुत सारे algorithms है, like insertion sort, quick sort, bubble sort, merge sort, heap sort. Which algorithm needs to be considered? So worst case में जिसकी कम से कम time complexity है will be considering that. If I talk about the insertion sort, worst case में complexity is n square. Quick sort, worst case complexity is n square. Selection sort, worst case complexity is n square. Bubble sort, worst case complexity is n square. If I talk about merge sort, worst case complexity is n log n. Heap sort, worst case time complexity is n log n. So which algorithm you will be preferring? Obviously will be taking any algorithm which is going to take less time, that is n log n. n नहीं लेंगे शुभ्रा, रीजन इज क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ n आपने रिटर्न किया है दैट इज द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्शन सॉर्ट, और किसी में भी ऑर्डर ऑफ n नहीं आता, राइट कम से कम ऑर्डर ऑफ n आता है, बट दैट इज इन द बेस्ट केस. बट वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट हियर द इनपुट कि आपके पास जो इनपुट आएगी वो हमेशा बेस्ट केस होगा. जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, whenever we have to return the time complexity, we always consider the worst case. यानी कि मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा एल्गोरिथम को आउटपुट रिटर्न करने के लिए. अगर आपने बिल्कुल कम टाइम फिक्स किया कि भाई 2 मिनट में आंसर आना चाहिए, तो व्हाट इफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया. फॉर एग्जाम्पल आपने किसको बोला कि मैं 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा. आपने एज्यूम किया बेस्ट केस सिनेरियो कि आपको कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिला, कोई ट्रैफिक नहीं मिला, तो आप 10 मिनट में पहुंच लो. व्हाट इफ अगर आपको रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल मिल जाते, विल यू बी एबल टू रीच टू योर ऑफिस इन 10 मिनट्स? ऑब्वियसली नॉट, राइट. तो जब भी आप किसी को बोलते हो, आप क्या बोलते हो, it's always good to consider the worst case scenario. So here I'll be considering the worst case scenario. सारे sorting techniques को देखो, worst case में best time complexity that we are getting is n log n. So इसके बाद हम जितने भी algorithms का analysis करेंगे, अगर कहीं पे भी sorting वाला step आता है, arranging the elements in the ascending or descending order, then I'll be taking the complexity as n log n. क्यों n log n ले रही हूँ? I hope that the reason is clear, because this is the best time that can be offered by any algorithm in the worst case scenario. Next one, sort करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं. अब ये जो एरे के एलिमेंट्स है, these are sorted. अब एक एक करके ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या इसकी कैपेसिटी ग्रेटर देन 0 है. अगर कैपेसिटी ग्रेटर देन 0 है, then we can take the object. अब ऑब्जेक्ट फ्रैक्शन में लेना है या कंप्लीटली लेना है, फॉर दैट अगेन वी नीड टू चेक कि जो कैपेसिटी है इज इट ग्रेटर देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. मान लो कैपेसिटी 10 यूनिट्स है, वेट 7 यूनिट्स है, तो ऑब्जेक्ट हम कंप्लीटली लेंगे. इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन कंप्लीटली, तो प्रॉफिट भी कंप्लीटली मिलेगा, एंड इमीडिएटली वी नीड टू अपडेट द कैपेसिटी. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको कैपेसिटी को अपडेट करवाना पड़ेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग द वेट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट. अदर केसेस कैपेसिटी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कुछ कैपेसिटी है नैपसैक के अंदर, बट
its weight is greater than the capacity. For example, capacity है 2 units carry करने की, but जो object का weight है that is 5 units. तो पूरा object नहीं ले सकते. Then in that case we need to take the object in the fractions. We need to take the object in the fraction, और जब already it's running out of the capacity, so capacity becomes 0 and profit, जो भी पहले profit earn हुआ है उसमें आप उस particular object का fractions में profit add कर दोगे. What is the time required by step 3? यहाँ पे कुछ if and else use हो रहे हैं, so that's going to take the constant time. So here we have just one for loop. This is also going to take order of n. Third step is also taking linear time complexity. Step 1 takes linear time complexity. Step 2 के लिए n log n चाहिए. Step 3 के लिए n चाहिए. So what will be the total time complexity? सारे स्टेप्स में से जो मैक्सिमम होता है वही रिटर्न करते हैं. सो मैक्सिमम इज n log n. This means that the time complexity for greedy knapsack or fractional knapsack is n log n. Is this clear? So overall capacity of the greedy knapsack is n log n. Make sense? So anyone having any doubt in the application of greedy knapsack? सबसे पहले हमने understand किया कि what is greedy knapsack, क्या given होगा and what we are supposed to calculate. After that we discussed the algorithm, we solved some questions. जो questions आएंगे you will be, in fact question आया भी हुआ है, मैं आपको master class में करवाऊंगी. Objects were given, weight was given and you were supposed to find out the solution. So application based question. दूसरी चीज आपको match the following में 4 algorithms given होंगे, 4 complexities given होंगी, आपको match करवाने कि कौन से application की कौन सी complexity है. So I hope that this is clear to everyone. अगर steps clear है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. Simple English में आप steps लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे steps लिखे थे. तो पहले आपने क्या किया, सारे objects के लिए profit upon weight ratio calculate की. Then we are finding when we are arranging the elements in the descending order. Then for all the objects we are looking for the capacity और उसके basis पे हम decide कर रहे हैं कि object completely लेना है या fractions में लेना है. तो आप जैसे मैंने algorithm लिखा है आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही इन steps को याद करने की जरूरत है. If you are comfortable in solving the questions, algorithm समझ आए, you are good to go. Okay? Ma'am, is theta n log n हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, it's theta n log n. बिकॉज थीटा आप कब यूज कर सकते हो, बेस्ट केस मींस अगर एलिमेंट सॉर्टेड है तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. एलिमेंट सॉर्टेड है, कैसे सॉर्टेड है आपको सॉर्ट करना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम बेसिकली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने रिटर्न की है, दैट इज बेस्ड ऑन स्टेप 2. और स्टेप 2 को अगर आपके पास एलिमेंट्स ऑलरेडी सारे सॉर्टेड भी, आपको नहीं पता कि प्रॉफिट अपॉन वेट रेशियो सॉर्टेड आई है या नहीं आई है क्योंकि आपने इसको कैलकुलेट करवाया. So we cannot presume that the elements are already in the descending order. Anyhow, you have to perform step 2 and step 2 आपके पास n log n ही लेगा, be it the best or the worst case. So it's theta of n log n. Okay? I guess आज वाला session यहीं पे end करते हैं because after this if I'll be starting with the next application, I thought of covering job sequencing with deadline, but if I'll be starting with that, we won't be able to finish it before like 5:30 or 5:45. तो काफी stretch हो जाएगा session. We'll discuss that in the next session. If you guys have any doubt, you can ask. Otherwise, we'll end our discussion. So I'll share this PDF in the Telegram group, that is Shefali ma'am Testbook. Link is in the description. I'm going to share my screen so that you can get an idea that from where you can choose the link. So daily PDF इस group में जाती हैं. पहले हम group देख लेते हैं. I'm going to share my screen. Just let me know if it's visible.
Hope it's visible. So when you go to the description, here is the description. So when you go to the description, here you can see the first link is for the master class. Master class में जितने भी हम concepts कर रहे हैं, जैसे आज हमने concept किया है greedy knapsack का, तो इसके जो भी PYQs हैं, those will be discussed in the master class. Master class कोई भी join कर सकता है, कोई charges नहीं, कोई subscription required नहीं है for master classes. And second link is for the NIC. अगर आप NIC पे target कर रहे हो, तो you can join the NIC super coaching. And if you want to join the Telegram group, so here is the link. So this is the third link for joining the Telegram. So you can join it. And fourth link is for the super coaching gate. Gate के benefits मैंने आपको पहले भी बताया है. So lot many benefits are there. So it's just like कि जितने core technical subjects आप BTech में CS से related पढ़ते हो, उन सबको आप conceptually, logically understand करते हो under the gate syllabus. So there are multiple courses available under the super coaching. ये multiple courses कहाँ से आए? Basically under the super coaching you will be getting the live sessions as well as the recorded sessions. जो detail में syllabus cover हो रहा है, that is in the recorded sessions. So recorded sessions are there from multiple sources like complete courses from Gate Forum, by Digimento, by Nimbus Learning, and by Testbook itself, that is by me and my team. So 250 plus videos hai. You can see the language used is the English language. That's a combination of Hindi and English. Rating is 4.9. So this series is really, really very good. So if you want to prepare, you can enroll yourself for this series. Without that, you won't be able to discuss that. Next one is for the super coaching. Okay, super teachers. You can have a look over the profile. Demo classes देख सकते हो. Live series. अभी हमने स्टार्ट नहीं किए बिकॉज करंटली स्टूडेंट्स आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जो लाइव सीरीज है उसमें हमारे पास जो सेशन आएंगे दोस विल बी द क्विक रिवीजन सेशंस. क्विक रिवीजन और डिटेल सेशन में सिर्फ डिफरेंस इतने, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाया जाएगा. द ओनली थिंग इज ड्यूरिंग द डिटेल सेशंस आई हैव टेकन n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हर टॉपिक से, बट जो क्विक रिवीजन है उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस करेंगे जितने भी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द subject. And apart from that, there will be the live doubt sessions and PYQ session under the live series. Mock tests will be included in the super coaching. यहाँ पे आपको test series अलग से लेने की जरूरत नहीं है. Everything is included along with the notes. तो जो study notes होंगे, that will be available in the PDF format, formula notes, computer science engineering means core technical subjects के notes, programming and data structures, operating system. You can see here this is under the log. तो ये जो notes होंगे ये PDF format में है. Almost per unit और per topic one PDF is there. Computer networks में छोटे छोटे काफी सारे topics है, तो chapter wise notes provide ना करके we have created the notes with the topic wise. तो यू कैन गो थ्रू दीज नोट्स. जो डिटेल नोट्स हैं इनमें हर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द सॉल्व एग्जांपल्स. जैसे आप किसी भी बुक से रीड करते हो, बट बुक में कुछ टॉपिक्स आपके गेट सिलेबस में है, कुछ नहीं है. एंड मोर देन वन बुक इज रेफर्ड फॉर मल्टीपल फॉर ईच सब्जेक्ट. एक से ज्यादा बुक्स रेफर की हुई है एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपको इतना सब कंटेंट एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है. यू विल गेट द होल कंटेंट एट one place. Under the formula notes will be just having the important concepts, note points and formulas, so that you can easily revise all the subjects. सारे subjects एक ही दिन में आपके सारे रिवाइज हो जाए. That's why we have the formula notes. The only difference is formula notes में सिर्फ और सिर्फ important points है. No extra theory is there, no examples, nothing is there. अगर एग्जाम्पल्स चाहिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए आप डिटेल नोट्स को रेफर करोगे. क्विक रिवीजन करनी है तो उसके लिए आप फॉर्मुला नोट्स को रेफर करोगे, तो आपकी ये मेहनत भी बच गई. सिमिलरली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के भी नोट्स अवेलेबल है. फॉर दिस वी हैव 3 plans. इफ यू आर प्लानिंग टू join the super coaching, we have 3 plans available: 1 year plan, 2 year plan and 3 year plan. 1 year plan is recommended for, मैं recommend करती हूँ 4th year या फाइनल ईयर या फिर पास आउट स्टूडेंट्स को. जो 3rd ईयर में, फॉर देम आई रिकमेंड कि आप 2 year कोर्स ले लो टू बी ऑन सेफ साइड, और अपनी पेस पे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो. अब इतने एक ही टॉपिक के 4 5 6 सॉल्यूशंस, 4 5
रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है, किसको देखने हैं? आप एक सेशन को देखो, जो भी फैकल्टी आपको अच्छा लगता है, जिसका भी कंटेंट अच्छा लगता है। अगर नहीं समझ में आया, यू वांट मोर नंबर ऑफ एग्जांपल्स और मोर थ्योरी ऑन दैट, यू कैन रेफर टू द other faculty for the same topic, right? क्योंकि हर फैकल्टी ने अपने सेट ऑफ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, सो दिस वे यू विल गेट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मोर नंबर ऑफ एग्जांपल्स। अगर आपके पास टाइम कम होगा तो आप एक ही बार देख पाओगे सेशंस को। इफ यू हैव मोर टाइम, then definitely you can go through the same topic for multiple times. Okay, so this is the benefit of joining the super coaching, and definitely you will get these discounted price if you are going to use the coupon code. You can see here the coupon code is Shefali, SHGFALI. So to get LIS, to get the maximum profit, you can use this coupon code. If you want to see the complete series for GATE 2024, you can follow this YouTube link. So इस link पे complete YouTube series available है, so you can go through it. So this is all from my side. If you guys have any doubt, you can ask. Otherwise, I'll be discussing my schedule. जो लोग already sessions follow कर रहे हैं, उनको तो I guess schedule clear है. Guys, my screen was visible. Was it visible? Teach no ma'am means what? All right, so let's go back to our slides. Okay, so in the next session, we'll be discussing, first of all, we'll be covering the concept of job sequencing with deadline. Job sequencing with deadline. Then we'll discuss the concept of Huffman coding followed by optimal merge pattern. Okay. So this will be the agenda. I don't think we'll be able to consider the third application in tomorrow's session. We'll be just talking about job sequencing with deadline and Huffman coding. Guys, do you have any doubts or queries? Monday to Friday, daily I'm taking two sessions, but this Wednesday there will be no session. I'll be on off. So Monday to Friday, we have the session from 4 p.m. to 5 p.m. This is 1 hour session, which is on YouTube, under which we are covering the concepts. And then from 8 p.m. to 8:30 p.m. we have a master class, which is free master class. And under this, I'm taking the PYQs from GATE, but definitely these are beneficial for ISRO aspirants as well. Saturday and Sunday, I'm taking the sessions. Saturday and Sunday, I take the PYQs on ISRO. So the session time is 7 p.m. to 8 p.m. This is also on YouTube. जिन लोगों ने अभी भी इसरो का फॉर्म नहीं भरा है, बेटा फॉर्म को फिल आउट कर लो. लास्ट डेट इज 14th of June. 14th of June. एज लिमिट आपको पता है, दैट इज 28 years. 28 years. Okay. Any queries? I don't understand what does it mean teach no ma'am. मतलब नहीं पढ़ाऊं या पढ़ाऊं?
Anyways, after this, we cannot start with the next application. So we'll discuss that in the next session. If you guys have any doubt or query, you can ask. This is the final call. Otherwise, I'm going to end our discussion. And I'll see you at 8 p.m., in which we will be solving the previous year questions. Any doubt or query? I guess there is no doubt. So this is all from my side, guys. Thank you so much. And I'll see you at 8 p.m. Please be on time. Bye bye.